Assalamu alaikum viewers, welcome back. Today we have a new topic, beggary occurs. Yes, ये है अफाक्सन series class 7th English book, unit number 8. Beggary occurs मतलब भीख मांगना एक लानत. So let's come towards our original text. Here we have the original text, right? और यहाँ पर ओरिजिनल टेक्स्ट में हम उर्दू ट्रांसलेशन के साथ पढ़ेंगे. कहते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं कि बेगिंग इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन मेनी कंट्रीज, कि भीख मांगना एक संजीदा मसला है कई मुल्क में भीख मांगना एक संजीदा मसला है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है. इट इज अ सोशल इशू दैट अफेक्ट्स नॉट ओनली द बेगर्स. ये एक माशी मसला है जो न सिर्फ भीख मांगने वालों को पर असरअंदाज होते हैं, आल्सो सोसाइटी एज अ होल, बल्कि एक पूरे माशरे पर भी ये इसकी असर होती है. बेगिंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ आस्किंग फॉर मनी. कहते हैं कि भीख मांगने से मुराद पैसों का मांगना है, फूड या खुराक का, और अदर नेसेसिटीज या और ज़रूरियात का, यूजुअली इन पब्लिक बेस, अमूमन अवामी जगहों पर. इन पाकिस्तान में बेगिंग हैज बिकम अ कॉमन साइट ऑन द स्ट्रीट. आपको भीख मांगना आपको गलियों में एक आम तौर पर नजर आएगा, इन ट्रैफिक जगहों पर, एंड इवन ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट. हत्ता कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी आपको ये बेगर्स मिल जाएंगे, भीख मांगने वाले. मेनी पीपल स्पेशली चिल्ड्रन, कई लोग खसूसन बच्चे, आर फोर्स इनटू बेगिंग, वो उसको मजबूर किया जाता है भीख मांगने पर, बाय देयर फैमिली, उनके खानदान वाले उनको मजबूर करते हैं. हु बिलीव, जो ये यकीन रखते हैं, इट टू बी अ क्विक वे टू अर्न मनी, कि ये पैसे मांगने का एक बहुत तेज जरिया है, रास्ता है. हाउ एवर दिस इज फार फ्रॉम द ट्रुथ, ताहम ये हकीकत से बहुत दूर है, कि मतलब भीख मांगना इससे बहुत जल्द आप पैसे कमा सकते हैं, ये हकीकत से बहुत दूर है. बेगिंग इज अ डेंजरस एंड अनहेल्थी वे, भीख मांगना जिंदगी के खतरनाक और गैर सेहतमंद तरीका है ऑफ लाइफ दैट एक्सपोजेज द इंडिविजुअल टू फिजिकल एंड इमोशनल एब्यूज, जो इन अफराद को जिस्मानी और जज्बाती ज्यादती का निशाना बनाता है. वन ऑफ द रूट काज ऑफ बेगिंग इन पाकिस्तान इज पावर्टी. भीख मांगना पाकिस्तान में इसका जो बुनियादी मसला है, बुनियादी वजह है, वो गुर्बत है. गुर्बत की वजह से लोग ज़्यादातर ये भीख मांगते हैं. मैनी फैमिलीज इन द कंट्री लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन एंड आर अनेबल टू प्रोवाइड देयर बेसिक नीड्स. ज़्यादातर लोग पाकिस्तान में अगर देखें तो ये गुर्बत के नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं और अपने आप के लिए बुनियादी ज़रूरियात भी फराहम करने के काबिल नहीं होते. एज अ रिजल्ट, जिसके नतीजे में दे सेंड देयर चिल्ड्रन टू बेग ऑन द स्ट्रीट, वो अपने बच्चों को गलियों में, मोहल्लों में भीख मांगने के लिए भेजते हैं, टू अर्न मनी फॉर फूड, ताकि वो खुराक के लिए पैसे कमाएं, एंड अदर नेसेसिटीज, और बाकी ज़रूरियात के लिए. इन एडिशन, इसके साथ साथ, देयर आर आल्सो पीपल विद डिसेबिलिटीज, और भी लोग हैं जो माजूर है, और इलनेस, या वो बीमार होते हैं, हु आर अनेबल टू वर्क, जो कि काम करने के काबिल नहीं होते, एंड आर फोर्स टू बेग द सपोर्ट टू सपोर्ट देमसेल्व्स, और वो मजबूर होते हैं भीख मांगने पर कि अपने आप को सहारा बने. बेगिंग आल्सो हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी. भीख मांगने का माशरे पर एक नफी या मनफी असरात भी मरतब होते हैं. इट कंट्रीब्यूट्स टू द स्प्रेड ऑफ डिजीज, और बीमारी फैलने में इसका भरपूर जो है साथ होता है. as beggars often live in unsanitary condition and do not have access to basic health care. कहते हैं कि भिखारी अक्सर गैर सेहतमंद हालत में रहते हैं और इन्हें सेहत की बुनियादी सहूलियात तक रसाई नहीं होती. In addition, इसके साथ साथ, it creates an unpleasant environment for tourists, ये सियाह के लिए एक नाखुशगवार माहौल पैदा करते हैं, and local residents, और आम बाशिंदों के लिए, मेकिंग द सिटी लुक अनक्लीन एंड अनकेप्ट, जो कि ये एक शहर को गैर नापाक और नाशाइस्ता वो दिखाई देती है. द गवर्नमेंट हैज टेकन सम मेजर टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ बेगिंग, बट मच मोर नीड्स टू बी डन. कहते हैं कि हुकूमत ने भीख मांगने के मसले को हल करने के लिए कुछ इक़दामात की है, लेकिन सब
لیکن بہت کچھ کرنا باقی ہے. One solution is to provide financial assistance to impoverished families. اور اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ وہ غریب خاندان کو جو غربت میں رہتے ہیں ان لوگوں کو مالی سہولیات فراہم کرے so that they do not force their children to beg, تاکہ وہ اپنے بچوں کو بھیک مانگنے پر مجبور نہ کرے. The government can also provide skills and find employment. اور حکومت کو چاہیے کہ وہ ان بچوں کو ہنر سکھائے اینڈ اور اسے کوئی روزگار جو ہے تلاش کرے. Another solution is to build rehabilitation centers. اور ایک اور سولوشن یہ بھی ہے، حل یہ بھی ہے کہ بحالی کے مراکز جو ہے وہ قائم کیے جائے where beggars can receive shelter، جہاں پر یہ beggars جو ہے اپنے لیے پناہ وہ تلاش کرے، فوڈ، خوراک اینڈ میڈیکل کیئر اور طبی دیکھ بھال. These centers can also provide them with education. اور یہ سینٹر جو ہے بحالی کے مراکز جو ہے چاہیے کہ یہ ان کو تعلیم فراہم کرے اینڈ ٹریننگ اور ٹریننگ بھی دے so that they can reintegrate into society and lead a normal life، تاکہ وہ اس معاشرے کو دوبارہ مستحکم کرے اور ایک عام سی زندگی گزارے. In conclusion، آخر میں نتیجتاً بیگنگ از اے سیریس پرابلم، کہ بھیک مانگنا یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے ان پاکستان میں that needs to be addressed، جس کو حل کرنے کی، جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. while it may seem like a quick way to earn money، جبکہ یہ ایسے دکھائی دیتا ہے کہ پیسے مانگنے کا اور پیسے کمانے کا ایک تیز طریقہ راستہ جو ہے یہ سمجھا جاتا ہے. it is a dangerous and unhealthy way، یہ خطرناک اور غیر صحت مندانہ طریقہ ہے of life that exposes individual and abuse، جو کہ ایک ان افراد کو جسمانی اور جذباتی زیادتی کا نشانہ بناتا ہے and contributes to the spread of disease، اور ساتھ ساتھ یہ بیماری بھی پھیلاتا ہے، ان میں بھی اس کی بہت زیادہ ہاتھ ہوتے ہیں. the government and society need to work together، کہتے ہیں کہ معاشرے اور حکومت کو چاہیے کہ وہ اکٹھے کام کرے to find the solution، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے that will help beggars lead a normal life، اور یہ بھیک مانگنے والے کی عام مدد کرے گی لیڈ اے نارمل لائف، تاکہ یہ بھی ایک عام سی زندگی گزار سکے. اور آخر میں کہتے ہیں لاسٹ پیراگراف میں in order to create a better society for all، ایک سب کے لیے ایک بہتر معاشرہ تخلیق کرنا it is important، یہ ضروری ہے to understand the root cause of begging، تاکہ ان کی جو بنیادی وجہ ہے بھیک مانگنے کی اس کو تلاش کیا جا سکے and work towards finding a solution، اور اس کی حل کی طرف جو ہے وہ تلاش کی جا سکے that benefit everyone، جو کہ ہر ایک شخص کو فائدہ دے. by doing this، یہ سب کر کے we can help reduce the numbers of people living in poverty، ہم جو ہے بہت زیادہ لوگ جو غربت میں رہتے ہیں ان میں کمی لا سکتے ہیں، اس کی مدد کر سکتے ہیں ان میں کمی لانے کی and create a safer، healthier and more prosperous community، اور ایک محفوظ، صحت مند اور کامیاب معاشرہ تخلیق کر سکتے ہیں. It was all about today's lesson. I hope you like it. If you have any question and you want to translate any other lesson or poem, so do comment there. I'll be waiting for you. آخر میں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے سپورٹ کرے. تو میں ایک نیو یوٹیوبر ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے ایک انٹرسٹنگ کنٹینٹس لاؤں اور آپ کی مرضی کے مطابق ہو. سو سبسکرائب کرنا نہ بھولے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.